The farmer stir has now entered day 17. PM Modi once again reiterated the government's position on the three controversial farm laws. Prime Minister, while backing the farmers, said that the new laws will benefit farmers and will give them more freedom. देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सबका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है। जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमारे देश के किसानों का फसलों का नुकसान कम होगा, उतनी ही उनकी आय बढ़ेगी। नीति से और नियत से सरकार पूरी तरह किसानों का हित करने के लिए प्रतिबद्ध है। Meanwhile, farmers have called for a blockade of the Delhi-Agra and Delhi-Jaipur highways as part of their strategy to pressurize centre. Farmers plan to block national capital from all sides and toll plazas will be freed from tax collection for a day. While the number of protesting farmers have now swelled to 20,000, this tally is expected to further rise as more people are joining in from the neighbouring states of Punjab and Haryana as well. Let's also tell you about the security tightening that has happened, with more farmers set to come to the national capital. Delhi police have made elaborate arrangements at all the borders. Apart from COP, CISF, RAF, CRPF and BSF have all been deployed at the Singhu border, where around 3,000 personnel have been deployed, while 2,500 additional cops have been deployed in Gurugram as well. Uttar Pradesh police has also increased cover in the border areas. ये भी देखा जा रहा है कि कोई इसमें शरारती तत्व इनके किसान भाइयों के बीच में घुस के अव्यवस्था न फैलाए, इससे भी उनको अवगत कराया गया है और उसी के लिए पुलिस व्यवस्थाएं की गई हैं और लगभग 130 कंपनी फोर्स हमने पूरे प्रदेश में लगा रखी है। इसके अतिरिक्त सभी राजपत्रित अधिकारी, सभी मजिस्ट्रेट आज सुबह से ही सेक्टर स्कीम लागू करके लगातार भ्रमणशील हैं। Let me in fact go across to Alok, who's joining us at this point in time. Alok, if you can take us through all the latest developments right now. So the security in fact has been tightened across in several places. Yes, Avni, security has been beefed up all across the borders in the national capital, whether it's Haryana, whether it's Uttar Pradesh, or whether it's that Gurugram and other Agra border that is touching. In fact, what the farmers had called that these two borders, Agra and Jaipur highway, they are going to block. What we are learning that farmers have already left their places and they are moving towards these borders as well. So there is the possibility by today night or by tomorrow morning they are going to block these two borders as well. But right now 4 borders have already been affected. I am standing at Singhu border, their Tikri border that is connecting Haryana, and also 2 borders of Uttar Pradesh, Ghaziabad and Noida are already been affected heavily because of the farmers are sitting there and they have already done the blockade. In fact, I am being joined by the farmer leaders from Delhi. Very interesting point that I am telling it to you that they have come from Delhi, because what we were learning as of now that the Delhi farmers were not seen over here, but today we are seeing that the farmers from the national capital, although in the farming happens very less in the Delhi, but these farmers have come here. First, I would like to show you the visuals also, that there you can see multi-layer barricading that has been put up, and in fact day before yesterday and yesterday also less force, around 2,000 police force was deployed, but right now around 3,000 police personnel that include paramilitary force are now deployed here at Singhu border. As of now, the farmers have not told their plan whether they are moving from this place or marching from this place towards the national capital, but they are saying that they will definitely go towards the Delhi heart of the capital to intensify the protest, to build the pressure on the government. Sir, आप दिल्ली से ही हैं, आप कहाँ किस कॉर्नर पे आप खुद खेती करते हैं? मेहरौली के पास गांव है मेरा।
मेहरौली के पास। हाँ जी। आज ही प्रधानमंत्री जी ने अभी थोड़ी देर पहले एक इवेंट में बोला कि किसानों के लिए बहुत किया है सरकार ने, और उन्होंने ये भी कहा जो पहले जो सरकारें आई हैं उनके तरफ से कुछ खास नहीं हुआ, जब से ये सरकार आई तब से बहुत किया गया है। और ये जो तीनों बिल हैं वो फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से, और वो कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा बिल है, इसको किसानों को पढ़ना और समझना चाहिए। क्या कहेंगे? देखो, प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया है, जीडीपी माइनस में लाने वाले पहले प्रधानमंत्री। और ये किसानों की बात करते हैं, किसान तो 1/3 में तो वैसे ही कमाई में आ गया। वो जो 10 रुपए कमाता था वो 3.5 रुपए पे आ गया। डबल कहाँ कर रहा है कमाई? ये किसान को खत्म करने वाला है। सिर्फ इस हिंदुस्तान का नाम अंबानिस्तान और अडानिस्तान रख देगा ये। बाकी कुछ नहीं है। किसान का तो भला होता किसान। तो इस बिल्स को आपने देखा है अभी तक? पढ़ा है? हाँ, बिल्कुल पढ़ा है। कुछ फायदा हो सकता है या नुकसान है? सारा नुकसान ही है। हाँ, कोई फायदा नहीं है इसमें। अच्छा, सर आप क्या कहेंगे? आप भी यहीं से आए हैं, मुझे पता चला पालम साइड से आपकी खेती होती है। मेहरौली साइड से हम यहाँ पर आए हैं, किसान लोग पालम से आए हैं। आप एक्स सर्विसमैन? मैं एक सर्विसमैन भी हूँ। पहले मैं किसान था, फिर आर्मी मैंने ज्वाइन करी और फिर किसान बन गए। तो क्या कहेंगे? काफी बताया जा रहा है कि इस बिल का अभी भी सरकार कह रही है कि हम वापस तो नहीं लेंगे लेकिन अमेंडमेंट करने की। नहीं, हमें अमेंडमेंट नहीं, पहले बिल को वापस ले और दोबारा से इसको कानूनी तौर देकर कानूनी तौर पर इसको फिर से हम लागू जब तक नहीं करवा लेंगे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पूरे देश का किसान एकजुट होकर के इस बिल के खिलाफ लड़ेगा। इस सरकार को बहुत नई चीज हमने देखा, क्योंकि दिल्ली के किसान अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। आज हम देख रहे हैं काफी संख्या में दिल्ली के किसान भी जुड़ रहे हैं। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। दिल्ली के तो किसान जो हैं वो हमारे जो भाई किसान आए हुए हैं वो हमारे मेहमान है। हम तो होस्ट हैं। हम हर तरीके से, जब तक के ये भाई यहाँ पर धरने पर है, ये बिल काले कानून जो वापस नहीं लिए जाते हैं, तब तक हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग भी कुछ लेके आए शायद? आप? हाँ, हम हमारा ये राशन है लंगर के लिए, और पहले भी हम लंगर के लिए यहाँ पर भेज चुके हैं। दूसरा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कल 25,000 एक्स सर्विसमैनों ने मेडल वापस किए हैं। राष्ट्रपति भवन भी गए हैं और वहाँ हम लेटर दे करके रिसीव करा करके आए हैं। और मैं आपको ये चैलेंज करता हूं कि मंडे तक 25 के 25 लाख जो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं वो भी वो किसान पहले हैं, वो भी मेडल वापस करने के लिए वहां पर फिर राष्ट्रपति जी से मिलेंगे। तो विरोध पूरा है सर, सरकार पूरा विरोध है। Okay, so this is what the farmers who are from the national capital, they are also joining the protest here at Singhu border. So definitely they are getting huge support, the farmers who are from Punjab, Haryana, and what we are learning in the coming days and in the coming hours, around 1,500 tractor trolleys are also coming to this Singhu border. They may also go towards the other location of the national capital. So that is why the security has also been beefed up, because the police say that they will not allow the farmers to go inside the national capital. Back to you. All right, Alok, thank you for getting us that ground report and those voices as well. So that's the situation as far as Singhu border is concerned. Security being stepped up across several of the entry points in the national capital. Meanwhile, let's also take a look at this ground report that has been sent to us by Times Network's Gurpreet Chinna from Punjab's Shambhu, which is an interstate border area connecting Punjab's Patiala district with the neighbouring state of Haryana. No collection of taxes was seen here, and heavy deployment of forces was seen as well. This is the first toll plaza after crossing the Shambhu border from the Punjab side. This is the first toll plaza in Haryana where we can see that the staff, the employees, they say that the services have already been shut down for the last from yesterday onward, and today there is no charges, no fee collection by the toll plaza. And the moment of each and every vehicle which is coming from Punjab, they are not even charging any fee from them. So at the same time that the toll employees, they say that the authorities, they have already decided to take precautions so that there should not be any problem for law and order in Haryana. So that's why they are already taking the precautions. And at this point of time, and the farmers, as we know that more and more farmers, they are moving from Punjab towards Delhi, and we have seen since morning that there is a lot of movement, a lot of tractors and trolleys, including the vehicles. The farmers are moving towards Delhi because the main target they are going to hold, they are going to
stop the toll plazas for functioning near the Delhi, but at the same time Haryana police as well as the Punjab police, they have already taken the precautions. They have deployed a huge force, and even we can see some of the fire brigade vehicles, they have also come, but the movement of the vehicle is totally free. They are not charging a single fee from any vehicle at this point of time. All the vehicles are coming from Punjab and they are entering towards Haryana and they are moving towards Delhi.